So today we are going to do banks and what are banks all about, banks as well as NBFCs. So yeah, banks are actually nothing but financial intermediaries. फाइनेंशियल इंटरमीडियरी क्या होता है? फाइनेंशियल इंटरमीडिएट जो है वो एंटिटी होता है that acts as a middleman between two parties in financial transaction between lenders versus borrowers, investors versus entrepreneurs, households versus business firms. Such financial intermediaries can be subdivided into one, formal and second, informal. Financial intermediaries can be subdivided into formal and informal, right? If we look at this figure, so formal financial intermediaries can be further divided into banks and non-banks. Banks are of two types in general. I'm saying, like, we'll talk in detail, but in general banks are of two types: commercial and cooperative. Among commercial, it can be public, private, foreign, differential, and under differential RRB, LAB, SFB and PB. We'll all learn about all this. And cooperative के अंदर आता है urban, state, central and PACs. Now in non-bank there are IFI, primary dealers, NBFCs. Okay, so we're gonna learn first about, wait, yeah. So we are going to learn about banks first initially. Okay, so what are banks and when was Reserve Bank of India established? This is a timeline. In 1913, commercial banks were required to register under Companies Act, बट जो मॉनिटरिंग थी ना वो लैक्स थी. नो CRR, SLR, बेसल नॉर्म्स. कोई CRR नहीं थे, कोई SLR नहीं थे, कोई बेसल नॉर्म्स नहीं थे उस ज़माने में. बस क्या था कि बैंक्स वर रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट, राइट. सो 1926 में रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी, हिल्टन यंग कमीशन रिकमेंड्स setting up of central bank named Reserve Bank of India. 1929 में Great Depression in USA leads to collapse of 450 plus banks in India. So British India government becomes serious about setting up RBI. British Indian government जो है became serious about setting up of RBI. कब? 1929 में. क्यों? क्योंकि collapse of बैंक हुआ था इसलिए. तो किसी सजेस्ट करा था? हिल्टन यंग कमीशन ने पहले ही कहा था. उसने कहा था कि एक सेंट्रल बैंक बना लो वरना दिक्कत होगी, लेकिन किसी ने नहीं सुनी थी उस टाइम. What happened? Later on they made after Great Depression. Okay, so 1934 में RBI Reserve Bank of India was enacted and 1935 में RBI becomes operational from 1st April from first governor RBI governor Osborne Smith and India का जो वाइसरॉय था विलिंगटन. Government ownership was 4.4% only. 1935 में commercial bank fulfilling certain conditions were listed in second schedule of RBI Act and such scheduled banks were required to keep CRR with RBI. Okay, so जो commercial banks थे they were fulfilling certain conditions and were listed in second schedule of RBI Act and such scheduled banks were required to keep CRR with RBI. Fine. 1943 में जो CD देशमुख थे वो सेकेंड फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे और वो इंडिया के फर्स्ट गवर्नर ऑफ RBI बने. And he also participated in Bretton Woods Conference in USA 1944. 1948 से 49 में all the private investors share transferred to Government of India under RBI Transfer of Ownership Act 1948. Therefore, जो RBI था, RBI Governor answerable to Parliament has to pay dividend to government from its profit. 1949 में Banking Regulation Act give license to companies to open bank, give permission to banks to open branches, prescribe auditing norms, liquidity norms for branch such as SLR, protect करता है interest of depositor, force करता है elimination, merger of weak banks. Fine. So RBI Governor and Deputy Governor. RBI का Act Section 8 provides for not more than 4 Deputy Governors. They are selected by financial sector regulatory appointments such as Search Committee, FSRASC, headed by Cabinet Secretary, successful candidate named to appointments.
committee of cabinet headed by Prime Minister for final approval. Governors and deputy governor tenure usually not always 3 years. Reappointment is possible. 2018 में December में शांतिकांता दास was appointed governor for 3 years. He replaced उर्जित पटेल. शांतिकांता दास जो थे उसने किसको रिप्लेस करा था? उसने रिप्लेस करा था उर्जित पटेल को. 2021 में मोदी गवर्नमेंट renewed his tenure for 3 years till December 2024, thus giving him a total tenure of 6. Years. Shantikanta Das is a retired IAS, former finance secretary, members of 15th Finance Commission. RBI officers and department. RBI के 4 रीजन्स हैं. नॉर्थ में दिल्ली, ईस्ट कोलकाता, सदर्न चेन्नई, वेस्टर्न मुंबई. RBI has various department after banks, NBFC, पेमेंट सिस्टम, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्सेट्रा. ठीक है. सो RBI के पास बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं आफ्टर बैंक भी. RBI के 4 रीजन्स हैं ऑफिस के. नॉर्थ में दिल्ली, ईस्ट में कोलकाता, साउथ में चेन्नई, वेस्ट में मुंबई. एंड वेरियस डिपार्टमेंट्स आफ्टर बैंक भी, लाइक NBFC, पेमेंट बैंक्स, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्सेट्रा. RBI के फंक्शंस. RBI फंक्शन एज कंट्रोलर, रेगुलेटर, बैंकर एंड मिसलेनियस. फाइन. सो अपना देख, Controller of money supply, issues of M0 under RBI Act, make monetary policy. Controller of foreign exchange through FEMA Act. Banker to government and public department manager. Bankers bank, lender of last resort, advises in monetary matters. Regulator of all banks through BR Act, payment system. 7. Regulator of IFI, NBFCD and others. Promotional role. Customer protection through ombudsman. Financial inclusion through PSL norms. Requires bank to open 25% branch in rural areas. Data publication and awareness. Annual financial stability report. International cooperation. Example Basel, IMF, G20, Financial Stability Board, etc. Example 2021 में RBI became member of Network for Greening the Financial System. Right, so RBI became the network of greening for financial system, NFGS, network for greening the financial system. NFGS is a group of central bank to contribute to development of environment. and इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस में. फाउंडेशन ये 2017 है. किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पर? नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम. Mean other banks retain their deposit with RBI. Wait, we'll do questions later. Scheduled banks. So what is actually a scheduled bank? Step 1, register a company, acquire capital via shares and bonds, get bank license from RBI. Do you have minimum 5 lakh paid up capital reserves? Are you protecting your depositors? No, then it's not a scheduled bank. Are you protecting your depositors? Yes, then scheduled bank. So if you are protecting your depositor, it is a scheduled bank. When RBI is satisfied with 2 conditions simultaneously, that a public sector or private sector bank has minimum 5 lakhs, bank is not conducting business in a manner harmful to its depositors, then such bank is listed in second schedule of RBI Act. This is known as scheduled bank. Now bank types based on schedule status, scheduled and non-scheduled, commercial cooperative दोनों में होता है. ठीक है. और जो शेड्यूल बैंक है उनका एक्सेस टू RBI विंडोज होता है, मोर ट्रस्टेड टू गवर्नमेंट प्राइवेट कंपनीज एंड डिलीवर करते हैं गवर्नमेंट की स्कीम्स लाइक PMJDY. राइट. तो शेड्यूल बैंक कैन बी सब डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. Commercial banks. Scheduled bank can be divided into 2 parts. Scheduled commercial banks, right, like SBI, Axis. Scheduled cooperative banks, required to deposit CRR
money to RBI's office vault, eligible to borrow deposit funds in RBI's window operation, and are required to protect the interest of depositors and abide the RBI norms. Non-scheduled bank. Many cooperative banks are non-scheduled banks, but we need not see their list. Can maintain the CRR money with themselves in their own office vault. Depends on RBI discretion. Of course, they can have it, else RBI can shut them under Banking Regulation Act. उन्हें CRR SLR ये सब रखना है और बोरो डिपॉजिटर्स के इंटरेस्ट भी ऑब्वियसली प्रोटेक्ट करने हैं. ऐसे नहीं है कि तुम लेके भाग जाओगे बिकॉज यू आर नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स. जस्ट द थिंग इज कि RBI का डायरेक्ट रेगुलेशन ही रहेगा. जो CRR SLR है वो उनके वॉर्ड में ही रहेगा, उनके पर्सनल वॉर्ड में रहेगा, राइट. सो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स and big private companies are more likely to open the bank account, employ salary deposit accounts in it. Banks become eligible to partner in the government financial inclusion schemes, PM Jan Dhan scheme for opening bank account of poor people. Non-scheduled bank less likely to happen, usually not eligible. Airtel Payment Bank and Paytm Payment Bank are categorized in scheduled banks. Airtel Payment Bank and Paytm Payment Bank are categorized as scheduled bank. Airtel Payment Bank and Paytm Payment Bank are categorized as scheduled bank in 2021 से 22. Commercial bank pre-independence. 1770 में Bank of Hindustan, Calcutta, Europeans owned it, so it was truly Swadesh. 1806 to 42, 3 presidency banks at Bengal, then Bombay, then Madras. 1861 में all 3 were given the right to issue currency. All 3 were given. 1861 में all the 3 were given right to issue currency. 1921 में they were combined into Imperial Bank of India SBI. ठीक है. सबसे पहले 1770 में अपना बैंक ऑफ हिंदुस्तान बना कैलकाटा में, यूरोपियंस ओन्ड इट, सो इट वाज ट्रूली स्वदेश. 1806 में 3 प्रेसिडेंसी बैंक थे. वेट 3 प्रेसिडेंसी बैंक्स. 1861 में all 3 were given right to issue currency. 1921 में they were combined into Imperial Bank of India. ना 1865 में इलाहाबाद बैंक है which is European owned. Allahabad Bank is what? Allahabad Bank is European owned. 1894 में PNB was Indian owned. लाला लाजपत राय हेल्थ फाउंडेशन. 1908 में बैंक ऑफ बड़ौदा बाय महाराज सत्यजी. 1908 में महाराज 1908 में बैंक ऑफ बड़ौदा किसने बनाया था? महाराज सयाजी राव गायकवाड़. 1913 में 1913 से 30s में स्टेट ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, राइज एंड कोलैप्स ऑफ बैंकिंग इंडस्ट्री, देन बर्थ ऑफ RBI. ओके, और उसके बाद 1940 में क्या था? 1940 में था स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर, जयपुर, हैदराबाद, ट्रावनकोर रिस्पेक्टिवली. पोस्ट इंडिपेंडेंस एंड दीज बैंक्स बिकेम एसोसिएटेड बैंक ऑफ SBI एंड अल्टीमेटली मर्ज्ड इन SBI. ठीक है, तो ये सारे बैंक्स. but क्या नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स आफ्टर इंडिपेंडेंस. तो देख, nexus between banks and industrialists. From 1950 to 1960, only 188 elite people controlled the economy by being board of top 20 banks, 1452 companies, and numerous insurances and finance companies. This led to reckless lending to directors and their firms. So banks fail frequently, and RBI has to close them.
प्राइवेट बैंक जो है वो अनविलिंग थे टू ओपन इन रूरल एरियाज। उन्होंने कहा कि यार रूरल एरियाज में नहीं खोलना क्योंकि यार वहाँ पर कस्टमर ऐसे नहीं आते हैं, दे वांट प्रॉफिट। Private banks unwilling to open in rural areas. This did not help in financial inclusion of poor. This did not help in financial inclusion of poor farmers, MSME or achievement of 5-year plan targets or reducing the regional imbalances. 1948 में आरबीआई का ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एक्ट, 1948 में ऑपरेशन पोलो। तो देख एक बात बता, आरबीआई का ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एक्ट कब हुआ था? 1948 में, राइट। और यहाँ पर दिया है पूरा सीक्वेंस अपना, फाइन। एंड अपना 1955 में इम्पीरियल बैंक नेशनलाइज एंड बिकेम एसबीआई। 1955 में एलआईसी टुक ओवर प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज। 57 में फर्स्ट कम्युनिस्ट गवर्नमेंट इन केरला। 61 में ऑपरेशन विजय फॉर लिबरेशन ऑफ गोवा, दमन एंड दीव। 1963 में स्टेट बैंक ऑफ जयपुर एंड बीकानेर मर्ज हो गए थे। देख यहाँ पर है कि 57 में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट इन केरला आई थी एंड 61 में ऑपरेशन विजय हुआ था गोवा में, दमन एंड दीव में। ये चीज़ क्यों बताई अचानक से? और एलआईसी कब हुई? 55-56 में, फाइन। ये सब अचानक से क्यों बताया है? क्योंकि दिस वाज आस्क्ड इन द क्वेश्चन ऑफ यूपीएससी एग्जाम। उसके बाद 1969 में अपना बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग ऑर्डिनेंस। 1969 में 14 प्राइवेट बैंक्स विथ 40 crores with 50 crore deposits were nationalized. Example, Bank of Baroda, PNB, Dena and Canada, etc. Catholic Syrian Bank, Ratnakar Bank, Dhanlakshmi Bank did not have such large deposits, so they were not nationalized. Old private banks. 72 या 73 में GIC Act took over the private non-life general insurance company. Later GIC was reorganized with 4 subsidiaries: National Insurance, New India Insurance, Oriental Insurance and United India Insurance. 1980 में 6 banks with 200 crore deposits were nationalized. 2019 में previously state government of J&K owned 60% shares in J&K Bank. Article 370 का removal. Union government took over its shareholding. Reform Committee. Following committees were made for reform in banking sector. M. Narasimhan 1991 में, M. Narasimhan 1 1997 में, Raghuram Rajan कमेटी 2007 में, PJ नायक कमेटी 2014 में। Death of M. Narasimhan हो गया. He was ex-governor of RBI and chairman and various committees on banking sector reform. Therefore was known as father of Indian banking system reforms. क्यों? क्योंकि वो ex-governor भी था, राइट। और हाँ, तो इसी वजह से हम क्या कहते हैं? फादर ऑफ बैंकिंग, फादर ऑफ इंडियन बैंकिंग सिस्टम रिफॉर्म्स। ओके, नाउ Golden Anniversary of Nationalization. Economic Survey 20. Economic Survey 2019 से 20 में Volume 1 Chapter 7 observe. First round of bank nationalization was done in 1969. So 2019 से 69 में 50 years की Golden Anniversary of the bank nationalization. Positive क्या था कि after nationalization the number of bank branches in India, the amount of loan given to farmers, villagers has increased. ठीक है, और the greatly contributed to agriculture, production and poverty removal in rural areas. PSB account for 70% of banking business in India. And what was negative? Negative यही था कि from 1960s से 80s government has launched green revolution focused on poverty removal through 5-year plans. RBI has initiated selective credit control. RBI ने क्या इनिशिएट करा है? RBI ने इनिशिएट करा है अपना selective credit control tools and moral suasion to channelize more loans to farmers.
So those actions were responsible for boosting agriculture. इन्होंने पहले बोला है कि नेशनलाइजेशन की वजह से देखो इतने फार्मर्स को लोन मिला, लेकिन नेगेटिव में ये है कि 60 से 80s तक गवर्नमेंट ने लॉन्च करा था ग्रीन रेवोल्यूशन, फोकस करा था ऑन पोवर्टी रिमूवल थ्रू 5-year प्लान. RBI has initiated selective credit control tools and moral suasion to channelize more loans to farmers. So those actions were responsible for boosting agriculture and reducing poverty. Thus bank nationalization itself not helped much. Fine. Private sector banks are better than PSB. 2019 में PSB का टोटल लॉस पता है 66,000 करोड़ से ज़्यादा हुआ था, which is double than India's budget allocation for education. Fine. और ये बात हम नहीं बोल रहे, इकोनॉमिक सर्वे बोल रहा है. Indicators total NPA in Indian banks. Majority of bad loans, non-performing assets. Total bank frauds, 90% cases occur in PSB. Thus, PSB are clearly not efficient today. If they become more efficient, 11 lakh plus crore profits for the government. Profitability जो होती है ना usually less होती है than private sector. PSB reason for inefficiency and remedies. Reason why PSBs are inefficient. PSB staff salary does not depend on profitability of the bank. Employee union frequently engage in strikes, hartals, and they have apathetic attitude towards the use of artificial intelligence, computer technology, marketing and customer satisfaction. सबसे पहले तो उनकी सैलरी जो है उनके काम पे डिपेंड नहीं हो रही, और उनका एपैथेटिक एटीट्यूड भी होता है टूवर्ड्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, मार्केटिंग एंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन. अब इसका सोल्यूशन क्या है? इकोनॉमिक सर्वे 20 में सोल्यूशन है. ये अलाउ करता है कैंपस रिक्रूटमेंट, लेटरल एंट्री इन हायर मैनेजमेंट पोजीशन, मेक एम्प्लॉयज पार्ट ओनर्स थ्रू एम्प्लॉय स्टॉक ओनरशिप प्लान, use artificial intelligence, machine learning, big data analytics, geotagging of mortgage assets, etc. Set up organization PSBN network to implement above ICT solutions. So इकोनॉमिक सर्वे 20 का इकोनॉमिक सर्वे क्या है? प्रॉब्लम बताती है पर सोल्यूशन भी बताती है. तो फिर इसका फर्स्ट का सोल्यूशन है कि तुम भाई अगर उनकी सैलरी जो है वो बैंक के प्रॉफिट पर नहीं डिपेंड कर रही है तो इनके एम्प्लॉयज़ को ना पार्ट ओनर्स बना दो, विच इज़ एम्प्लॉय स्टॉक ओनरशिप प्लान. और इनका एपैथेटिक एटीट्यूड है ना, तो तुम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ करवाओ, मशीन लर्निंग, जियो टैगिंग ऑफ मॉर्गेज एसेट एंड सेटअप करो एक ऑर्गेनाइजेशन PSBN नेटवर्क टू इम्प्लीमेंट अबव ICT सॉल्यूशन. फर्दर, सिंस जो गवर्नमेंट है वो मेजॉरिटी शेयर होल्डर है, यूजुअली पर्सन फेवर्ड बाय प्रेजेंट डे रूलिंग पार्टी बिकम द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स irrespective of merit qualification. Thus, political consideration have significant control/influence over bank business operations. PSBs are subject to Right to Information Act, Central Vigilance Commission, Comptroller and Auditor General, Central Bureau of Investigation, courts and media in more stringent manner. Consequently, PSB officials fear harassment under the wheel of vigilance, investigation and media trials. They prefer safety and conservation over risk-taking and innovation. Consolidation of PSB. PSB में merger होता है. 2008 to 10 में स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र एंड स्टेट बैंक ऑफ इंदौर मर्ज इनटू RBI. तो जो स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र था और स्टेट बैंक ऑफ इंदौर था, इट वाज मर्ज इनटू SBI, सॉरी नॉट RBI, इट वाज मर्ज इनटू SBI. कौन कौन? स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र एंड स्टेट बैंक ऑफ इंदौर वाज मर्ज इनटू SBI. State Bank of Indore was merged into SBI. Fine. और 2013 में
जो अपना भारतीय महिला बैंक था वो सेटअप एज पीएसबी, हेडक्वार्टर दिल्ली, 100% ओनरशिप ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है। एंड बीएमबी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ऑल वुमेन स्टाफ एंड डिपॉजिट होल्डर्स, बोथ मेन and women, loan given predominantly to women and to without collaterals up to rupee 1 crores 2000 2017 में 1 अप्रैल को बीएमबी, भारतीय महिला बैंक एंड 5 एसोसिएटेड बैंक ऑफ एसबीआई विद स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर, जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर was merged with SBI from 1st April by swapping the shares. 2017 में नवंबर में ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म पैनल सेटअप अंडर फाइनेंस मिनिस्टर chairmanship. This panel examined the proposal for merger consolidation of public sector banks and towards cabinet for approval. Department of Financial Services coordinates with file work. 2019 में 1 अप्रैल को विजया एंड देना टू बी मर्ज विद बैंक ऑफ बड़ौदा. Vijaya and Dena Bank were merged into Bank of Baroda. Among these three old BOB greater than Vijaya, then Dena. BOB and Dena nationalized in 1969, headquarter Mumbai. Vijaya was nationalized in 1980, Bangalore. Amalgamating banks and anchor banks. Amalgamating banks क्या है, जैसे कि ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स 1943 में, हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा. यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया कोलकाता. एंकर बैंक क्या है, जैसे कि पीएनबी. इट विल बिकम द सेकेंड लार्जेस्ट बैंक आफ्टर एसबीआई इन टर्म्स ऑफ बिजनेस साइज एंड ब्रांच नेटवर्क. सिंडिकेट बैंक हेडक्वार्टर मणिपाल कर्नाटका. कैनरा बैंक हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटका. अमालगमेटिंग बैंक्स और एंकर बैंक्स दो टाइप के होते हैं. अमालगमेटिंग बैंक्स मतलब जो उनके अंडर में आते हैं. एंकर बैंक मतलब विच इज़ द मेन बैंक, जैसे कि ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, उसका एंकर बैंक क्या है, पीएनबी है. सिंडिकेट बैंक, उसका एंकर बैंक क्या है, कैनरा बैंक. वैसे ही आंध्रा बैंक एंड कॉर्पोरेशन बैंक जो है, it's Union Bank of India which is the anchor. Allahabad Bank, Indian Bank. After this process is over, we will be left with 12 PSBs, Indian Post Payment Bank. Geographical and technical synergies in ATM branches, soft security, server costs, etc., resulting into reduced cost of business, better lending and deposit rates. Such bigger banks can even expand business at global level. इकोनॉमिक सर्वे 20 जो है, वॉल्यूम 1, चैप्टर 7, वो कहता है कि ग्लोबल टॉप 100 बैंक लाइक चाइना में 18 बैंक्स, यूएसए 12 बैंक्स, जापान, फ्रांस, इंडिया. इवन स्वीडन एंड सिंगापुर हैव मोर ग्लोबल बैंक्स देन इंडिया. इंडिया में सिर्फ एक ही बैंक है, एसबीआई, जो कि आता है, ठीक है, और वो रैंक 55 करता है. बाकी चाइना में देख रहे हैं मैक्सिमम 18 बैंक्स हैं. सो इवन स्वीडन एंड सिंगापुर हैव मोर ग्लोबल बैंक्स दैन इंडिया. इवन दो दीज कंट्रीज हैव size of GDP is much smaller than India. So it's not about quantity of banks, it's about quality of banks. So given India's size of economy, India should have 6 to 8 banks in global top 100. These large banks provide large loans. India can reach 5 trillion GDP. Therefore, merger of public sector bank is necessary. It will increase the manpower, financial strength of merger entities, and they can compete. कहें कि कैसे, हाँ, इसका सल्यूशन क्या है कि इंडिया में कोई भी ग्लोबल बैंक नहीं है इस लेवल पे. इसका सल्यूशन यही है कि हमें कंसोलिडेट करना चाहिए पीएसबी को. सो फर्स्ट तो था कि नेशनलाइज करो, और सेकंड है प्राइवेटाइजेशन. नेशनलाइजेशन करो
और नेशनलाइजेशन में हमने अपने ड्रॉबैक्स देखे कि कितना लॉस हो रहा है हमें 66,000 करोड़ समथिंग का. सो अब ये इन्वॉल्व करता है गवर्नमेंट सेलिंग 51% और लार्जर शेयर होल्डिंग टू प्राइवेट पार्टीज. देन सच पब्लिक सेक्टर बैंक, ये जो पब्लिक सेक्टर बैंक थे विल कन्वर्ट इट इनटू प्राइवेट सेक्टर बैंक. फॉर एग्जांपल एक्सिस बैंक एंड IDBI बैंक. UTI बैंक प्राइवेटाइजेशन इनटू एक्सिस बैंक. 2007 set up in 60s as a सरकारी म्यूचुअल फंड कंपनी थ्रू यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया एक्ट 1963. सेटअप कब हुई थी? इन 60s में एज अ सरकारी म्यूचुअल फंड कंपनी थ्रू यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया एक्ट 1963. फाइन. एंड अपना इट ऑब्टेन लाइसेंस टू ओपन UTI बैंक. इट ओपन लाइसेंस टू ओपन UTI बैंक. Ketan Parekh share market scam. Government has to bail out UTI further restricting 2007. Became Axis Bank. Axis Bank में 77% प्राइवेट शेयर होल्डिंग है. प्राइवेट शेयर होल्डिंग LIC की है. डोंट थिंक कि LIC इज गवर्नमेंट कंपनी. तो प्राइवेटाइजेशन कैसे हुआ वो माना जाता है. बस वी नीड टू कंसीडर दैट, राइट. सो UTI बैंक प्राइवेटाइजेशन इनटू एक्सिस बैंक. IDBI purchased by LIC. I'm really sorry. Axis बैंक को LIC ने नहीं खरीदा था. UTI बैंक का प्राइवेटाइजेशन हुआ है एक्सिस बैंक में. IDBI बैंक इज परचेज्ड बाय LIC. एंड 2014 में RBI की जो PJ नायक कमेटी थी सजेस्ट गवर्नमेंट शुड एग्जिट शेयर होल्डिंग इन स्मॉलर PSB टू इन्हांस देयर एफिशिएंसी. 2014 में जो RBI की PJ नायक कमेटी थी उसने सजेस्ट करा था कि गवर्नमेंट को एग्जिट करनी चाहिए शेयर होल्डिंग इनटू स्मॉलर PSBs. एंड बजट 2016 में गवर्नमेंट अग्रीड टू reduce its shareholding to 50% in IDBI Bank. Positive, government needs not waste taxpayer money in running such loss-making banks. Government is no longer worried about Basel recapitalization of IDBI. Negative में क्या है कि LIC policy holder is going into a loss-making bank. They will be deprived of better insurance investment products compared to a situation if LIC invests in a profitable company. 2018 में IDBI had huge losses among PSB, so no mentally fit investors willing to buy government shares. So government LIC to buy its 40% for 9k crores. 2019 में IDBI had huge loss PSB, so no mentally fit investors will buy government share. इसीलिए LIC को बेच दिया गया था 9,000 crores में. As of 2022, IDBI bank ownership 42.24% by LIC, 45.48% by Government of India, and government aims to sell its shareholding to private investors. Though LIC is a public sector entity, but RBI ने declare करा IDBI को as a private sector bank because government is no longer a direct majority holder. RBI classified IDBI as a private sector bank. Answer, send your suggestion pen. Budget 2021 में proposed to take up privatization of 2 public sector banks. 2021 में न्यूज़पेपर ने हिंट करा था कि 4 PSB are short listed for privatization. बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया. राइट. सो न्यूज़पेपर में 4 PSBs are short listed for privatization. बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक एंड सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया. PSB में प्राइवेटाइजेशन, बैंकिंग इन्वेस्टमेंट कंपनी. PSB में जो प्राइवेटाइजेशन हो रही है बैंकिंग इन्वेस्टमेंट कंपनी को उसका वो थोपा गया है, लाइक रिस्पॉन्सिबिलिटी थोपी गई है. PSB का जो प्राइवेटाइजेशन है बैंकिंग इन्वेस्टमेंट कंपनी
2014 में आरबीआई की जो पीजे नायक कमेटी थी फॉर गवर्नेंस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया, 2014 में आरबीआई की जो पीजे नायक कमेटी थी फॉर गवर्नेंस ऑफ बैंक इन इंडिया, पीजे नायक कमेटी किस लिए बनी थी? पीजे नायक कमेटी वॉज मेड फॉर गवर्नेंस ऑफ बैंक इन इंडिया. He suggested setting up of BIC. Government should transfer PSB shares to it. BIC will act as parent or holding company, and all the PSB will become subsidiary daughter companies. BIC will then appoint board of directors in these PSB and make a policy decision. Privatization, merge them. Issue bonds in the market to recapitalize the PSB for Basel norms. Government political interference in the functioning of public sector bank. Government की जो responsibility थी to recapitalize them through taxpayers' money will do decrease. This BIC is not yet implemented, but once it will be, okay. Since government will own BIC company, then it can still interfere with those banks. So solution is not very powerful. This is very much argumentative nature and is not useful in exam. Fine, these are all the FAQs. An anti-argument against merger and privatization of banks. Employees worry seniority. Promotion, increments. Financial burden of voluntary retirement scheme. What is VRS? Okay. Transfer and VRS of employee. Bank may lose regional identity and customer intelligence. Big customers may shift to other banks for faster service and personalized privileges. Private sector banks are no saints. There have been instances of private sector banks engaging in money laundering activities, taking bribes to pass loan to unworthy borrower, which ultimately harm the depositors. ठीक है. सो अपने जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं वो कोई सेंट्स नहीं है. दे हैव बीन इंस्टेंसेस ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक की जब वो मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं या फिर वो गलत लोन दे रहे हैं जो कि अल्टीमेटली हार्म करता है. प्राइवेटाइजेशन से और प्रॉब्लम क्या होगी? VRS की प्रॉब्लम होगी. बिग कस्टमर्स विल शिफ्ट टू अदर बैंक्स. कमर्शियल बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स. जब नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स होता है वॉज डन विथ लॉफ्टी ऑब्जेक्टिव, बट पॉलिटिसाइजेशन इन पब्लिक सेक्टर बैंक्स क्रिएटेड न्यू सेट ऑफ प्रॉब्लम्स. Nationalization of banks was done with lofty objectives, और जो politicization of banks था, public sector banks, created new set of problems. Government administered loan interest rate for populism, low profitability for PSB. Political interference, low recovery difficult. Employee union hampering any innovation or customer responsiveness. 1991 में जो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस था, फाइनली फोर्स गवर्नमेंट टू सेट अप अ कमिटी फॉर बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स अंडर फॉर्मर RBI गवर्नर N. Narasimhan. He suggested कि गवर्नमेंट शुड डिक्रीज शेयर होल्डिंग इन पब्लिक सेक्टर बैंक्स. RBI should decrease CRR and SLR. Government should not dictate interest rate to banks, liberalize the branch expansion policy, allow entry of new private banks and new foreign banks. Round 1, round 2 and round 3. This is 3 rounds of banking licensing in India. फाइन. सो 1991 में बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हुआ था विच फाइनली फोर्स गवर्नमेंट टू सेट अप अ कमिटी फॉर बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स अंडर फॉर्मर गवर्नर नरसिम्हम. Government should decrease its shareholding in public sector bank. RBI should decrease CRR and SLR. Government should not dictate interest rate to bank, liberalize the branch expansion and allow entry of new private banks and new foreign banks. ICICI, HDFC, IndusInd, ये सारे बैंक्स हैं. इनका नाम इतना याद करने की ज़रूरत नहीं है. Ranjan invited applications. Bimal Jalan committee made selections. किस कमेटी ने selections करे थे? Bimal Jalan committee made
selections, fine. ऑन टैप लाइसेंस टू ओपन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, कोई भी प्राइवेट कंपनी या एंटिटी कैन ओपन बैंक्स ओनली आफ्टर गिविंग लाइसेंस फ्रॉम आरबीआई अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट. प्रीवियसली वन हैड टू वेट. पहले क्या होता था कि लोगों को वेट करना पड़ता था टिल आरबीआई इनवाइटेड एप्लीकेशन, बट ऑन टैप सिस्टम one can apply RBI whenever he wishes. If resident Indian individual, NBFCs or private companies, minimum 10-year experience in banking finance sector. Proposed banks shareholding will be initially controlled by Indians. Must be willing to open 25% branches in unbanked rural areas. Minimum 500 crore capital is required. Large industrial groups and NBFC with more than 5,000 crore asset is not allowed. Example of on-tap universal bank applicants: Chaitanya India, Pankaj Vaish. RBI में श्यामला गोपीनाथ कमेटी reviews pass rejects the application. कौन रिजेक्ट करता है एप्लीकेशन? श्यामला गोपीनाथ. Open a bank. If you open a commercial bank at present, steps are: first you have to register the company with Ministry of Corporate Affairs under Companies Act. Then you have to arrange minimum 500 crore capitals for this. If you want to issue shares in the share market to acquire this, then you have to get permission from SEBI. Finally, you apply for banking license from RBI using on-tap facility. अगर RBI is satisfied with, it will give you license as a non-scheduled bank. ठीक है, अगर RBI satisfied है तो वो लाइसेंस देगा non-scheduled बैंक की तरह. After that, you run the bank once you satisfy both the conditions to become scheduled bank. Condition A, minimum 5 lakh. You may already have that, but still second condition B also needs to be fulfilled. Condition A क्या है कि minimum 5 lakh capital plus reserve. You may already have that. Condition B, your bank is not conducting business in manner harmful to its depositors, so RBI may observe your bank's behavior for some months to satisfy itself. Allowing NBFC large corporate to set up banks. 2016 में RBI ने गाइडलाइंस निकाली थी ऑन टैप लाइसेंस के लिए. ऑन टैप मतलब यू मे अप्लाई whenever you are ready, just like a driving license. You don't have to wait for a notification or last date. On tap guidelines. Company with minimum 500 crore capitals can apply, however its technical rules about asset ownership were such that large NBFCs and industrial house could not apply for it. 2020 जून में RBI की जो PK मोहंती कमेटी थी फॉर कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर for Indian private sector banks, Mohanty committee recommended allowing large NBFCs, corporate industrial house to apply for banking license. Arguments in favor. ये है कि arguments in favor ये है कि ये increase करता है competition, better interest rate, customer service. Existing bank balance sheets have deteriorated by scams and bad loans, so they have over cautions and slow in lending to large business projects. Entry of fresh new banks to invigorate banking sector. IL and FS and other shadow banks जो हैं will be put under more effective control of RBI, which would decrease the chances of scam associated with NBFCs in future. Arguments against. Increased competition may lead to natural tendency of mis-selling the product, lending money to more risky business as evident from 2008 American subprime crisis. PNB का जो नीरव मोदी लोन स्कैम था, येस बैंक का राणा कपूर स्कैम था, ICI का वोडाफोन स्कैम था. RBI has failed effectively supervise even the existing bank. Already
Large NBFCs are involved in scams like ILFS scam, DHFL scam, Carvi Capital scam. Critics are afraid allowing large NBFC in banking sector फिर मोर ऐसे ज़्यादा स्कैम होंगे, ठीक है, इंक्रीज कर होगा कंपटीशन, स्कैम्स होंगे, और कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन लार्ज इंडस्ट्रियल हाउसेस इज नॉट इंस्पायरिंग कॉन्फिडेंस एट प्रेजेंट. एग्जाम्पल रतन टाटा वर्सेस साइरस मिस्त्री, इन्फोसिस फाउंडर नारायण मूर्ति, Vishal Sikka. Large industrial houses like Tata, Ambani, and Adani may use depositors' money mainly to finance their own project nepotism. Even अगर projects viable नहीं है, they will be evergreening of loan for them. Could be misused for money laundering by big industrialists. So may concentrate India's economic power, depositors saving in hands of few oligarchs. Then it could destabilize the entire banking system. Even in developed countries, the regulators and they do not encourage the entry of large corporates in banking sector, mainly for apprehensions about the government and financial stability. September में न्यूज़पेपर रिपोर्ट इंडिकेट कि जो RBI है, it is unlikely to implement PK Mohanty suggestion. RBI is unlikely to implement PK Mohanty suggestion, which was this कि ये अपना जो यहाँ पर है corporate structure for Indian private sector. Mohanty committee recommended allowing large NBFC corporate industrial houses to apply for bank license. इसके लिए RBI would consider क्यों corruption increase होगा, competition, nepotism, scams, ये सब होंगे increase. Conclusion about banking license to Adani Ambani. Considering aforementioned challenges, risk far outweighs the benefits. Risk outweighs the benefits. RBI and government should focus on improving the administration and supervision of existing banks instead of allowing large industrial houses here. So, considering above benefits, large NBFCs and industrial houses may give bank license after due diligence or effective supervision. Commercial banks, foreign banks, Nehruvian socialist economy में there are disdain and apprehensions about foreign banks. So only handful of them were allowed to open branches. But 1991 में reform stabilized, system liberalized. Right, system क्या हो गया? Liberalize हो गया. जो कमर्शियल बैंक्स हैं, हमने ये सब पढ़ लिया. अब कमर्शियल बैंक्स के अंदर आता है फॉरेन बैंक्स, राइट. सो हमने कोऑपरेटिव पढ़ लिया, ओके, और नाउ इज कमर्शियल, फाइन. So Nehruvian socialist economy में there was disdain and apprehensions about foreign banks, so only handful of them were allowed to open branches. Post 1991 reforms में system liberalize हुआ और अपना जो foreign banks था, foreign bank in India, they incorporated abroad, that is registered under Companies Act of foreign nations and opening branch subsidiary in India. Example Citibank, Bank of America, HSBC. While CRR and SLR and other norms applicable, but PSL norms are so beautiful. Sorry for that. While CRR and SLR and other norms are applicable, but जो PSL norms है ना वो vary करते हैं depending on number of branches. RBI gives them on tap license on reciprocal basis. इंडिया का जो पब्लिक सेक्टर बैंक है, India's public sector bank, foreigners can invest maximum 20% shareholdings. Although government thinking of raising it to 49% to help capital mobilization for Basel III norms. India private sector bank, foreigners can invest up to 49% and up to 74% by approval of government. Fine. Although government is thinking to increase to 100% to help capital mobilization for Basel III norms. Foreign banks. Foreign banks in India, LVB merged with DBS. Lakshmi Vilas Bank was set up in Tamil Nadu, so it is an old private sector bank. Its financial institution became weak, so RBI is merger amalgamation with developmental banks of Singapore
which is a foreign bank operating in India. कमर्शियल बैंक, डिफरेंशियल बैंक. देख, कमर्शियल बैंक, अब हमने फॉरेन बैंक्स पढ़ लिया, और RBI approved amalgamation of Development Bank of Singapore, which is foreign bank operating in India. फाइन. नाउ कमर्शियल बैंक में डिफरेंशियल बैंक आता है, यूनिवर्सल बैंक एंड डिफरेंशियल बैंक. Open branches anywhere, example SBI, ICICI. And differential bank, geographical restriction on branch opening for local area bank, regional, rural bank. Accept both time and demand deposit. Payment bank accept maximum 1 lakh deposit. 2021 में this limit increased to 2 lakhs. Give loans to anyone, which is 40% PSL. SFB, RRB 75% to PSL. Chronology of differential banks. RRB सबसे पहले रीजनल रूरल बैंक आया 1976 में, फिर लोकल एरिया बैंक 1996 में, स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड पेमेंट बैंक 2015 में, एंड होलसेल बैंक प्रपोज्ड. कमर्शियल बैंक, डिफरेंशियल बैंक. RRB and LAB, Regional Rural Bank, is based on M. Narasimhan Committee on Financial Inclusion